Good morning, dosto. Good morning, all. So let's begin with today's session. Look at the first question. With reference to the recent proposal to change the name of state of Kerala to Keralam, consider the following statements. Statement number one says, under Article 3 of the Constitution of India, Parliament has the power to alter the name of any existing state by law. Absolutely correct. Second statement says a bill for altering the name of a state can be introduced in the parliament without the recommendation of the president of India. No, that's not correct. Any such bill can only be introduced in the parliament with the prior recommendation of the president of India, right? So second statement is incorrect here. Look at the third statement. The president is required to refer such a bill to the concerned state legislature for expressing its views before its introduction in the parliament. Again, correct. The last statement says the views expressed by the state legislature on such a bill are binding on the parliament. No, that's not correct, right? That is not binding in nature. The question is, which of these statements given above is oblique are correct? So 1 and 3, both these statements are correct here. A for Ahmedabad should be the correct answer. Before we jump to the explanation part, let us understand the nature of Article 1. So Article 1 says that India shall be a union of the states, right? And what is the nature of this union? That is indestructible union of the destructible states. या फिर indivisible union of the divisible states. मतलब ये that union will always remain intact. Clear? Union cannot be changed. तो union will always remain intact. क्या चीज है जो कि चेंज हो सकती है? दैट इज स्टेट्स विद इन दिस यूनियन. अब जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर एक लार्ज स्टेट है एक्स, तो इसको बाइफिकेट करके हम दो नई स्टेट्स, दो स्मॉलर स्टेट्स बना सकते हैं या फिर दो स्मॉलर यूटीज बना सकते हैं, राइट? जैसे वाई एंड जेड. जैसे एक एग्जांपल देखिए, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2019. व्हाट हैपेंड विद दिस एक्ट? इस एक्ट के थ्रू क्या किया गया कि जम्मू कश्मीर एज अ स्टेट को दो यूटीज में बाइफिकेट कर दिया गया, द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड द यूटी ऑफ लेह लद्दाख. अंडरस्टूड? प्लस अगर दो स्मॉलर स्टेट्स हैं लाइक वाई प्लस जेड, तो इन दोनों स्मॉलर स्टेट्स को क्लब करके एक नई स्टेट बनाई जा सकती है ए. सिमिलरली अगर कोई स्टेट है ए, तो ए का नाम चेंज करके उसको किया जा सकता है बी, राइट? एंड ऑल्सो रिमेंबर कि ऐसा कोई भी बिल जब भी पार्लियामेंट में आता है तो वो आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं माना जाता, और इस तरह के बिल्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल मेजॉरिटी से पास होते हैं, राइट? एंड दे आर नॉट कंसीडर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अंडर आर्टिकल 368. एंड वन मोर थिंग दोस्तों, कई बार ये होता है कि जनरली एस्पिरेंट्स को आर्टिकल 2 एंड 3 के बीच में डिफरेंस समझ में नहीं आता. ऑलवेज रिमेंबर, आर्टिकल 2 का इस्तेमाल पार्लियामेंट ऑफ इंडिया तब करती है जब किसी नई स्टेट को जो कि यूनियन ऑफ इंडिया के बियॉन्ड है, उसके अंदर शामिल नहीं है. जैसे सिक्किम इज द बेस्ट एग्जांपल, राइट? तो वाज सिक्किम द पार्ट ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया? द आंसर इज नो. तो ओरिजिनली तो सिक्किम यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट नहीं था. तो यूनियन ऑफ इंडिया का पार्ट ये कब बना? 1974-75 में, राइट? डू रिमेंबर, थ्रू द 35th एंड द 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, राइट? तो जब भी किसी बाहर की किसी स्टेट को, बाहर के किसी रीजन को यूनियन ऑफ इंडिया में क्लब किया जाएगा, तो कौन सा आर्टिकल इन्वोक होगा यहां पे? कौन सा आर्टिकल इन्वोक होगा? दैट वुड बी आर्टिकल नंबर 2, राइट? और जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, जब उनका ऑल्ट्रेशन होगा, मतलब चाहे उनके एरिया को इंक्रीज करना हो, डिक्रीज करना हो, या फिर नेम को चेंज करना हो, तब कौन सा आर्टिकल इन्वोक होगा? दैट वुड बी आर्टिकल नंबर 3, राइट? चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट. सो लुक एट द एक्सप्लेनेशन. So you can see here, Kerala to become Keralam, Union Cabinet approves change of the name. The Kerala Assembly on June 24, 2024 had unanimously adopted a resolution urging the center to officially change the state's name to Keralam. तो यहाँ पे केरल ने रिक्वेस्ट किया था, उसके बाद में पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर को यहाँ पे फॉलो किया, और फाइनली यहाँ पे ये बिल अब जो है वो कैबिनेट में पास हो चुका है. अब ये पार्लियामेंट में आएगा, राइट? तो कौन सी मेजॉरिटी से पास होगा? सिंपल मेजॉरिटी, राइट? चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. द फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द वैलिडिटी ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स इन पार्लियामेंट कैन बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी इरेगुलरिटी ऑफ प्रोसीजर. नो, दैट्स नॉट करेक्ट. सी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज अ सॉवरेन बॉडी, राइट? अ सॉवरेन लॉ मेकिंग बॉडी, एंड as per article 122 of the constitution of India, the parliamentary procedures cannot be challenged before the court of law, right? तो जब तक ये पार्लियामेंट का प्रोसीजर फिनिश नहीं हो जाता, जब तक ये लेट्स सपोज कि एक बिल है, जब तक ये बिल एक्ट में कन्वर्ट नहीं हो जाता, तब तक के सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी कोर्ट ऑफ लॉ इस मैटर में इंटरफेरेंस नहीं कर सकती है. अंडरस्टूड दिस? तो याद रखिएगा,
As per Article 122, the parliamentary procedures cannot be challenged before the court of law, right? Look at the second statement. Discussion can take place in parliament with respect to the conduct of any judge of the Supreme Court or of a high court in the discharge of his duties. No, that's not correct. As per Article 121, the conduct of any judge of either the Supreme Court or the High Court cannot be discussed before the parliament, right? Until and unless the resolution of their removal is in the house, right? So याद रखिएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? नीदर वन नॉर टू. सो डी फॉर दिल्ली वुड बी द करेक्ट आंसर, नाइदर वन नॉर टू, राइट? चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द एक्सप्लेनेशन पार्ट. So look at the explanation. So you can see here we discussed the article 122, we discussed the article 122, and we also discussed the article 121, right? So answer क्या होगा? Neither one nor two. चलिए, now let's move on to the next question. So look at the question number 3. With reference to the India's pharmaceutical sector, consider the following statements. The first statement says India's pharmaceutical sector is the largest in the world. No, that's not correct. That is third largest, not the largest one. So first statement is incorrect here. Look at the second statement. India's pharmaceutical sector's exports do not include Ayush and the herbal products. No, that's not correct. It includes the Ayush and the herbal products, right? So second statement is incorrect here. The third statement is India is a global leader in the BCG and the measles vaccines. Absolutely correct. In fact, India पूरे वर्ल्ड का 60% जो वैक्सीन है उसको मैन्युफैक्चर करता है, उसको यहाँ पे प्रोड्यूस करता है, राइट? सो क्वेश्चन इज विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज ऑब्लिक आर करेक्ट? सो करेक्ट आंसर वुड बी ओनली 3. सो डी फॉर दिल्ली शुड बी द करेक्ट आंसर हियर, right? So look at the explanation part. In the Union Budget 2026, the Finance Minister Nirmala Sitharaman announced the Biopharma Shakti scheme to strengthen India's biopharma manufacturing ecosystem, right? With a corpus of 10,000 crore rupees over the next 5 years. So recently, Biopharma Shakti scheme was introduced by the Finance Minister under the Union Budget 2026. And that's why we picked up this question on the Indian pharmaceutical sector, right? Now let's move on to the next question. So look at the question number 4. With reference to the Indian tent turtle, consider the following statements. The first statement says it is listed in Schedule 2nd of the Wildlife Protection Act of 1972. Absolutely correct. Second statement says it is not included in the CITES appendix. No, that's not correct. It is included. The third statement says it is primarily a riverine turtle. Absolutely correct. The fourth statement says the adult females are predominantly herbivorous, while the males and juveniles are more carnivorous. No, this statement is again incorrect, right? So only two statements are correct here, 1 and 3. So how many of these statements given above is oblique are correct? So only two statements are correct here. So B for Bombay should be the correct answer, right? So look at the explanation part. इट इज प्राइमरली अ रिवराइन स्पीसी, राइट? याद रखिएगा. और यहाँ पे ये ऑमनिवोरस तो है, लेकिन इस तरह के जो स्टैब्लिश्ड यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया था, इस तरह का कोई भी स्टैब्लिश यहाँ पे रिसर्च या फैक्ट्स अवेलेबल नहीं है, राइट? सो करेक्ट आंसर होगा बी फॉर बॉम्बे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So look at the question number 5. The nudge campaign it is a behavioral economics based initiative to encourage the taxpayers to voluntarily improve compliance and timely filing. अब बेसिकली इसके 3 पार्ट्स हैं, 3 कंपोनेंट्स हैं. सबसे पहले तो ये एनकरेज कर रहा है कि जो टैक्स पेयर्स हैं वो वॉलंटरली यहाँ पे टैक्स लॉ के साथ में कंप्लायंस जो है वो स्टैब्लिश करें, राइट? तो टैक्स कंप्लायंट हो जाएं. प्लस जब वो टैक्स को फाइल करें तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन वो शेयर करें, इट हैज टू बी लाइक फेयर, राइट? इट हैज टू बी करेक्ट. तो जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करेंगे इट हैज टू बी फेयर, और यहाँ पे कोई भी इरेगुलरिटीज नहीं होना चाहिए. और तीसरा एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज द टाइमली फाइलिंग ऑफ द इनकम टैक्स रिटर्न्स, राइट? सो याद रखिएगा यहाँ पे एक तो टैक्स कंप्लाइंट आप हो, दूसरा आपके जो टैक्स क्लेम्स है यहाँ पे वो बिल्कुल फेयर हो, रेगुलर हो और करेक्ट हो, और साथ ही साथ में ये टाइमली मैनर में यहाँ पे आप इसको फर्निश करें. क्लियर? सो नज कैंपेन इज अ बिहेवियरल इकोनॉमिक्स बेस्ड इनिशिएटिव टू एनकरेज टैक्स पेयर्स टू वॉलंटरली इंप्रूव कंप्लायंस एंड टाइमली filing. चलिए, so look at the explanation part. The nudge campaign, it is a behavioral economics based initiative of the income tax department. It applies the concept of nudge theory. The subtle behavior prompts to encourage the voluntary tax compliance, timely filing of the returns, and accurate income disclosure. Right? याद रखिएगा इसको. चलिए,
Now let's move on to the next question. So look at the question number 6. With reference to the expert appraisal committee, consider the following statements. The first statement says that the expert appraisal committees are formed under the Environmental Impact Assessment Notification 2006 as amended. Absolutely correct. The second statement says these committees are constituted after every year. No, that's not correct. They are constituted after every 3 years, right? So look at the third statement. The third statement says that the approval of the EAC is required for the construction of a hydroelectricity power project. Absolutely correct, right? So question is, which of these statements given above is oblique are correct? So two statements are correct here, 1 and 3. So B for Bombay should be the correct answer here, right? So look at the explanation part, why we picked up this question. So recently an article was published in the Indian Express which says that Arunachal Hydel project, it will impact 23.4 lakh trees, but compensatory plantation will happen in MP, right? So the final environmental clearance only after in principle forest clearance. तो यहाँ पे ये कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट है जिसके क्लियरेंस की यहाँ पे बात हो रही है? दैट इज कमाला हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोजेक्ट, राइट? चलिए, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So look at the question number 7. With reference to the Bharat Vistar, consider the following statements. The first statement says it is an AI-powered multilingual tool designed to provide farmers with the relevant information. Absolutely correct. Second statement is the tool offers guidance on the crop planning and agricultural practices, but it does not provide weather forecast. No, it does provide. यहाँ क्या लिखा है? Does not. So the second statement is incorrect here. The third statement says Bharat Vistar will be available. The third statement says that Bharat Vistar will be available 24 hours a day as a digital agriculture expert. Absolutely correct. The fourth statement says it is available in the regional languages only. No, that is not correct. It is available in the other languages as well. For example, Hindi and English. So fourth statement is incorrect here. Question is, how many of these statements given above is oblique are correct? So only two statements are correct here, 1 and 3. So B for Bombay would be the correct answer, right? So look at the explanation part. The Bharat Vistar offering farmers crop support in their languages, right? It goes live today. So the new AI tool was announced by the Finance Minister Nirmala Sitharaman in the Union Budget 26-27 and allocated 150 crore rupees, right? So do remember, अभी इसको हाल ही में announce किया गया था और ये finally live हो गया है, right? So it is an AI-powered multilingual tool aimed at providing farmers with the real-time location-specific agricultural information, right? ठीक है. Now let's move on to so look at the question number 8. The statement, for in the absence of a magistrate, the strong will swallow the weak, but under his protection, matlab under the protection of the magistrate, the weak resist the strong. It reflects the idea of justice and governance in the ancient Indian political thought. The above statement is attributed to which one of the following ancient Indian text? So the correct answer is Arthashastra, which was authored by Chanakya, Vishnugupta और कौटिल्य. अब देखिए यहाँ पे बेसिकली कौन सा कॉन्सेप्ट डिस्कस हो रहा है? मत्स्य न्याय का, या फिर आप कह सकते हैं द माइट इज राइट. देखिए, अगर लेट्स सपोज कि इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, अगर एब्सेंस ऑफ अ स्टेट हो, राइट, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन ना हो, अगर एब्सेंस ऑफ स्टेट हो तो क्या हो जाएगा? एनार्की, मतलब एब्सेंस ऑफ लॉ. अगर एब्सेंस ऑफ लॉ होगा तो इन दैट केस क्या स्टैब्लिश हो जाएगा? जंगल राज. मतलब एक कॉन्सेप्ट है, एक फ्रेज है, माइट इज राइट, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस. तो माइट इज राइट हो जाएगा. और यहाँ पे जो स्ट्रॉन्गर होगा वो क्या करेगा? वो जो वीक होगा, जो फीबल होगा, जो वल्नरेबल होगा, उसको वो स्वेलो कर जाएगा, राइट? सो इन द एब्सेंस ऑफ द स्टेट, इन द एब्सेंस ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर, द स्ट्रॉन्गर विल स्वेलो द वीकर. अंडरस्टूड दिस? सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया है? ये दिया है चाणक्य ने अर्थशास्त्र में, राइट? एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट अर्थशास्त्र, इट्स नॉट अ बुक ऑन इकोनॉमिक्स, इट इज अ बुक ऑन स्टेट क्राफ्ट. और स्टेट क्राफ्ट का मतलब क्या होता है? स्टेट क्राफ्ट मीन्स द मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट अफेयर्स. अब स्टेट अफेयर्स में कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज आ जाते हैं? फॉर एग्जांपल द स्टेट फाइनेंस, राइट, द डिफेंस ऑफ द स्टेट, द फॉरेन अफेयर्स, द एक्सटर्नल रिलेशंस, राइट, द इंटरनल सिक्योरिटी. तो ये सब क्या है? ये स्टेट अफेयर्स हैं. तो इनको मैनेज करने का जो आर्ट है, जो मैनेजमेंट है, दैट इज नोन एज स्टेट क्राफ्ट, राइट? चलिए, so look at the explanation. The idea is prominently discussed in the अर्थशास्त्र attributed to Kautilya, right, also known as चाणक्य. तो यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? मत्स्य न्याय या the law of the fish. तो जो बड़ी फिश होती है वो छोटी फिशेस को खा जाती है, राइट? माइट इज राइट. एक बहुत ही खूबसूरत सा फ्रेज आता है पॉलिटिकल साइंस में, है ना? आपने, अगर आप पॉलिटिकल साइंस पीएसआईआर के अगर आप एस्पिरेंट हो तो आपने सुना होगा, लाइक द टायरनी ऑफ मेजोरिटी ऑन माइनॉरिटीज, राइट? तो इस तरह के स्टेटमेंट्स यूज करना चाहिए अगर आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो. चलिए,
Look at the question number 9. With reference to the exchange traded funds, ETFs, consider the following statements. The first statement says the trading value of an ETF, it depends on the net asset value of the underlying asset that it represents. Absolutely correct. See, ETFs are getting popularity day by day, right? And that's why we framed this question. Second statement says ETFs have lower daily liquidity and higher fees than the mutual fund schemes. No, that's not correct. जस्ट ऑपोजिट स्कीम, यहाँ पे जस्ट ऑपोजिट स्टेटमेंट लिखा हुआ है. यहाँ पे लिक्विडिटी जो है वो हायर है, जबकि जो फीस है जैसे म्यूचुअल फंड्स को परचेज करने पे जो लगती है उससे काफी कम है, राइट? तो लोअर फीस है और हायर लिक्विडिटी है, राइट? द थर्ड स्टेटमेंट सेज ETFs कैन बी ब्रॉट और सोल्ड इन फ्रैक्शंस. See, it depends on the platform, right? So it vary from platform to platform. Some platforms they allow and some they do not allow. So third statement is not universally correct. तो third statement यहाँ पे incorrect हो जाएगा. How many of these statements given above is oblique are correct? So only one statement is correct here, right? So A for Ahmedabad would be the correct answer. So look at the explanation part. So recently an article was published in the Indian Express. It says that for the first time, Indians invest more in gold ETFs than the equity mutual funds. तो रिटेलर्स जनरली कहां पे इन्वेस्ट कर रहे थे? इक्विटी में. या तो आपने फॉर एग्जांपल कि आपने एचएएल का एक शेयर ले लिया, या फिर आपने इन्फोसिस का शेयर ले लिया, राइट? या फिर मजगांव डॉकयार्ड का शेयर ले लिया, तो दिस इज इक्विटी. या फिर आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट्स कर दिए, राइट? सो मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स आर अवेलेबल. लेकिन अब जो रिटेलर्स हैं उनका इंटरेस्ट जो है वो चेंज हो रहा है. नाउ दे हैव स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इन दी ईटीएफ्स, राइट? तो अब ईटीएफ्स जो है लाइक ये इंडाइसेस के भी हो सकते हैं, ये किसी सेक्टर स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, कमोडिटीज के भी हो सकते हैं. जैसे मैं आपको एक रियलिस्टिक एग्जांपल बताता हूं, है ना? सो जस्ट मोमेंट, मैं आपको लेकर के चलता हूं यहाँ पे ईटीएफ्स में. सो जस्ट मोमेंट. सो यहाँ देखिएगा ध्यान से. देखिए ये निफ्टी है, निफ्टी 50, राइट? सो अब हम यहाँ चलते हैं निफ्टी में. यहाँ देखिए ध्यान से, ये रहा ईटीएफ आपके सामने, राइट? अब यहाँ देखिए आपके सामने यहाँ पे ईटीएफ्स अवेलेबल है, मल्टीपल यहाँ पे लाइक पूल्स अवेलेबल हैं. तो जैसे एसबीआई ईटीएफ है, देन निपॉन का है, आईसीआईसीआई है, एचडीएफसी है. तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इंडाइसेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं ईटीएफ्स में. तो अब इंडाइसेस में ट्रेड करना दैट्स हाईली रिस्की, क्योंकि काफी ज्यादा वोलेटाइल होता है. तो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग इन एफएनओज, निफ्टी एफएनओज, या फिर लाइक सेंसेक्स या फिर बैंक निफ्टी, उसकी जगह आप क्या कर सकते हैं? आप ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, निफ्टी ईटीएफ्स में. तो आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करिए, है ना? अब जैसे आपको अगर नहीं पता है कि भाई निफ्टी 50 होता क्या है, तो मैं आपको बताता हूं कि 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइक शेयर्स का ये इंडाइसेस है, राइट? अब यहां देखिएगा ध्यान से दिस वन. तो ये आप देख सकते हैं कि निफ्टी में मल्टीपल सेक्टर्स के यहाँ पे शेयर्स इन्वॉल्व हैं, और देखिए सेक्टर वाइज यहाँ पे वेटेज बताया हुआ है. तो फाइनेंशियल सर्विसेज का वेटेज सबसे ज्यादा है, दैट इज 37.74%, राइट? उसके बाद देखिए यहाँ पे मल्टीपल सेक्टर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, जैसे ऑयल एंड गैस एंड कंज्यूमेबल फ्यूल, दैट इज ऑफ 10%. देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 9.1% का यहाँ पे शेयर है, राइट? देन यहाँ पे ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स हैं 6.89%. तो इस तरह से मल्टीपल सेक्टर्स हैं, क्लियर? और इन मल्टीपल सेक्टर्स के यहाँ पे शेयर्स अवेलेबल होते हैं निफ्टी 50 में. तो अब अगर आप निफ्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसके शेयर्स में, तो क्या आप सारे शेयर्स एक बार में ले सकते हैं? द आंसर इज नो. तो बेटर ऑप्शन क्या है कि आप निफ्टी में आप इन्वेस्ट करिए, और वो भी निफ्टी ईटीएफ के थ्रू. अंडरस्टूड? तो इसी तरह से कमोडिटीज के भी ईटीएफ्स होते हैं, और हर इंडाइसिस का ईटीएफ यहाँ पे अवेलेबल होता है, ऑलमोस्ट सभी इंडाइसिस का. चलिए, उम्मीद करता हूं कि इस प्रैक्टिकल एग्जांपल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि ईटीएफ्स क्या होते हैं. तो बेसिकली एक पूल ऑफ इन्वेस्टर्स हैं, राइट? चलिए मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. सो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 10 एंड इट इज गोइंग टू बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन. सो विद रेफरेंस टू द H125 light utility helicopter, consider the following statements. The first statement says it is the only helicopter in the history to have landed on the summit of Mount Everest. Absolutely correct. See, it is manufactured by Airbus, right? And where is the headquarters of Airbus? It is situated in Netherlands, right? और इसका जो operational headquarters है, जहां से day to day decisions होते हैं, it is based in France. So first statement is correct here. Look at the second statement. The first made in India H125 will be made as a result of the Indo-France Defense and Industrial Cooperation Agreement. Absolutely correct. The third statement says it will provide a decisive edge in high altitude logistics. Again correct. All these statements are correct here. Which of these statements given above is oblique are correct? So D for Delhi should be the correct answer, right? So look at the explanation part why we picked up this question. So there is a strong reason. The world's only helicopter to fly at Everest heights. It will be made in India, Modi on the Indo-France H125 project, right? So recently both the countries, they have elevated their ties to the special global strategic partnership, right? And also remember that the helicopter assembly line will be established in Karnataka, right? So the final assembly line of Tata Airbus will be set up in Karnataka.
सो उम्मीद करता हूँ यू गाइस अंडरस्टूड द इंटायर क्वेश्चन। तो दोस्तों ये था आज का सेशन, हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।